Isn't like as a Diksha Aram to our all the dearest students. आप लोगों ने एडमिशन लिया कुछ बनने के लिए फॉरेंसिक या साइबर एक्सपर्ट्स. द थिंग इज दैट कि हाउ कैन बी आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इन द प्रोफेशनल फील्ड हाउ टू बी बिहेव लाइक इन दिस थिंग. तो यही प्रोफेशनलिज्म सीखने के लिए 4-5 साल आप यहाँ पे रहोगे यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में. वहीं आपको सीखना है विथ अ टेक्निकल नॉलेज. यू हैव टू बी सम प्रोफेशनल नॉलेज ऑल्सो, क्योंकि हर एक के दिमाग में सवाल आता है कि वो एम आई, मैं क्यों आया हूँ, मैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई बर्थ. तो जब आप सोचो कि अब मेरे से लेके सब लोग के जेंडर अपने हाथ में था नहीं था, वो तो गॉड ने डिसाइड किया कि क्या बनना है मुझे, बॉयज गर्ल मैन वुमन. फिर नाम भी हमने में से किसी ने अपने आप तो रखा नहीं है. शायद किसी कोई लकी होगा कि जिसने खुद का नाम रखा होगा, तो ऐसा भी कोई नहीं है. हमारा नाम भी माँ बाप ने रखा कि कहीं किसी के घर पे किसी और का राज था, बुआ का तो चाची का या चाचा का या दादा का, तो उसने रखा होगा. लेकिन उसके बाद एजुकेशन आपने जो स्कूल में लिया वो भी किसी न किसी इन्फ्लुएंस से या रेफरेंस से अपने फैमिली मेम्बर ने डिसाइड किया. बट नाउ यू हैव डिसाइड दैट कि मैं जो भी हूँ, लेकिन नाउ आई वॉन्ट टू बिकम, जो मेरी पहचान बनने वाली है ये यही कोर्स से बनेगी. अप टू द 12th स्टैंडर्ड और बैचलर यू गेट द सम core related branches knowledge subject point of view, but whatever you will learn during these 4-5 years it will become your life. Maybe you forensic scientist, it might be a expert in the cyber security or in management side. जो पूरी लाइफ आपको जो नॉलेज का यूज़ करके अपनी एक कैरियर बनाना है, लाइफ बनानी है, यू हैव टू सेट योर फैमिली. ये डिपेंड रहेगा कि आप कैसा यहाँ से सीख के अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो. एक्सपेरिमेंट वही करना है आपको. तो ये जो 5 साल है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कैरियर लाइफ अप टू द 18 years. वॉट एवर द बेसिक इन्फॉर्मेशन यू मेट बी लर्न द सम लैंग्वेजेस, माइट बी इट विल बी नॉट यूजफुल इन फ्यूचर. फ्यू थिंग्स आर देयर, सोशल स्टडी से लेकर कोई भी. लेकिन अभी जो सीखोगे उससे ही आपको अर्न करना है. तो लर्न, जब तक आपका लर्न स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा तभी लर्न में से आप अर्न कर सकोगे. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है. हाँ, आप बहुत सारा प्रॉब्लम हर्डल्स आएगा ड्यूरिंग दिस 4-5 years एज ए यू आर टीनेजर एंड यंगर एज. बट यू हैव टू बिकम कॉन्स्टेंट थिंक कि मुझे बस अभी लाइफ टाइम यही करना है, इससे ही मुझे आगे बढ़ना है. हमारी टीम NSIT अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रिंसिपल डॉक्टर शैलेश अय्यर सर, a very strongest team is with us. Different experts will be helpful to throughout your journey. But वही बेनिफिट आपको लेना है. देखो, पीरसने के लिए तो सब लोग रेडी है, खाना किसको है, आप लोगों को ही है. तो नाउ इट इज़ इन योर हैंड हाउ टू मेक मैक्सिमम नॉलेज फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट. ओके, मैनेजमेंट विल प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटी, बट फैसिलिटी को यूटिलाइज किसको करना है, आप लोगों को ही करना है. तभी ये यहाँ से आगे आएगा. Second thing is that we're very grateful that NFSU is given the affiliation, a very few, maybe in single, less than 5 institutes are affiliated with the NFSU in the India, and so we are very lucky that. और रीज़न यही है कि यहाँ पूरा रिलीजियस एनवायरनमेंट है, और उसका बेनिफिट आपको भी लेना है कि जो भी पॉजिटिविटी यहाँ की एरा में है वो आप में भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको बाहर जाके प्रोफेशनलिज्म में वही काम करना है. आप समझो कि आप जो पढ़ रहे हो वो बहुत कॉमन चीज़ नहीं है. द फॉरेंसिक एंड साइबर ये एक ऐसी चीज़ है कि वेपन जैसा है. वेपन से मर्डर भी कर सकते हैं और ऑपरेशन भी कर सकते हैं. सही है. तो आपको ऑपरेशन करना है, आपको वी वांट टू बिकम गुड पर्सन इन द योर लाइफ. प्रोफेशनलिज्म ऐसा ही होना चाहिए, एथिक्स होना चाहिए. और ये एथिक्स आप तभी सीख सकोगे जब आपका ये जो 4-5 साल में एनवायरनमेंट रहेगा तब. तो मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज रेडी टू गिव हियर सम एथिकल एनवायरनमेंट. आपका यहाँ पे एटमॉस्फेयर ऐसा बना रहे, आपको कुछ सबसे अच्छा मिले और पॉजिटिव ऑरा में आप पढ़ो ये 5 साल, कि अगले 50 साल आपके जो लाइफ में बाकी की 50 साल है वो एकदम ब्राइट हो, प्राउड हो. और ये ऑर्गेनाइजेशन और NFSU का आपके लिए प्राउड हो कि भाई हमने आपको ये डिग्री दी, और इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द नेशन, इट इज़ वेरी गुड फॉर द वर्ल्ड. और आप ये जो नेक्स्ट जनरेशन, ये वर्ल्ड के नेक्स्ट जनरेशन हो, आप बहुत आगे बढ़ो. यही शुभकामना के साथ आप सबको NISET की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ. आप अपना गुड अच्छा कैरियर बनाइए, और वी आर रेडी टू गिव यू मैक्सिमम एंड बेस्ट फैसिलिटी इन थ्रू आउट दिस ईयर. थैंक यू वेरी मच.
I request our Vice President, sir, to kindly present a floral bouquet as a token of respect and warm welcome to our esteemed chief guest and our chief guest. With an illustrious career spanning over 33 years, Sir has left a remarkable imprint on both academia and administration. He currently serves as the Executive Registrar at NFSU, where his leadership, planning, and organizational capabilities play a vital role in steering the university to global excellence. Before joining NFSU in 2014, he made his mark at IIM Ahmedabad as a research in the significant World Bank project. His deep conceptual understanding and decisive administrative acumen have continuously safeguarded the standards and governance of our academic community. A man of immense humility, vision, and discipline, he brings with him a legacy of excellence and a mindset of progress. It is our utmost honor to invite our chief guest, Mr. Shri C.D. Jadeja, sir, to address the gathering. गुड मॉर्निंग एवरीवन. ये वांद्रा साहब और उनकी तरह तो बिकॉज ही इज़ एकेडमिशियन, आई एम नॉट एकेडमिशियन, आई एम एडमिनिस्ट्रेटर, सो उतना लेक्चर देना जमता नहीं है, क्योंकि एडमिन काम तो आपको पता है, फाइलें चलाना, एडमिशन करना, एफिलिएशन देना, टू रन अ यूनिवर्सिटी इज़ एडमिनिस्ट्रेशन. सो मैंने सोचा क्या बोलें, तो आई हैव जॉट डाउन समथिंग विच आई विल गो थ्रू. Thank you for inviting me. It is indeed a great pleasure that I am here. I was there when Amit Shah ji inaugurated this campus. That was before 2 years, and now I am again given an opportunity here. Esteemed principal, staff, faculty members, dear students, and proud parents who are there in the other room most probably. Jai Swaminarayan and a very good morning to you all. On behalf of National Forensic Sciences University and Narnarayan Shastri Institute of Technology, I extend a warm and heartiest welcome to each one of you on this special day. It is my privilege to especially welcome the distinguished dignitaries present here today: Shri Dharmesh Vandraji, Vice President NSIT, Professor Sailesh Iyer, In charge Principal NSIT, Shri Sanjay Sharma, Campus Director NSIT, and Professor Ravi Kumar, an old friend and a colleague, Director Training and Consultancy. I would also like to take this moment to acknowledge the visionary leadership of Padma Shri Dr. J.M. Vyas. ये मेरे बारे में तो इतना बोला, पर उतना illustrious career नहीं है जितना Dr. J.M. Vyas का है, because he has spent more than 55 years in the field of forensic science. And then this was the beginning in 2009 when Honorable PM, when he was the CM of Gujarat State, thought about that why should not we make a university in forensic science. And that was his dream, which was cherished and carried forward by Dr. J.M. Vyas. So he is the Honorable Vice Chancellor, and he is the longest serving Vice Chancellor in whole of the country, with more than 5 terms as the Vice Chancellor. As you know, NFSU is dedicated in different fields of forensic science: cyber security, digital forensic, wildlife forensic, homeland security, behavioral forensics, forensic psychology, criminology, and there are almost 70 areas where we are specializing. We started with 5 courses in 2009, where we had only 75 students. Now we have more than 8,000 students across the country, and also one campus at Uganda, Jinja. It is a matter of great pride to stand before you today of NSIT, an institution affiliated to this pioneering university. This campus is managed by Noble Swaminarayan Vividh Seva Niketan Trust. Not only a place of education, it is center of transformation. And today's program, Diksharam, marks the sacred beginning of your academic and professional journey, a journey of transformation. What begins here is not simply an academic course, it is a journey of transformation. In the years ahead, this place will mold you into responsible citizens committed to the truth, innovative professionals ready for changing the world, ethical human beings guided by values. Whether you are pursuing forensic science, cyber security, digital forensics, or forensic accounting, any field you say,
You are entering a profession where your work can determine justice, protect national security, and preserve integrity in society. What NSIT and NFSU provide: through the NSIT-NFSU partnership, you have access to modern laboratories, crime scene simulation, DNA profiling, cyber forensic labs, and more. Advanced tools from GCMS in toxicology to comparison microscope in ballistics, from VAC 8000 in question documents to state-of-the-art cyber ranges. Faculty with real-world experience who bring industry cases and research insights into the classroom. Direct exposure to national agencies like CBI, IB, NIA, Customs, DRI, and other investigative units. These resources, if used fully, will prepare you not only for jobs but for leadership roles in your field. Honorable HM desires that by next year, we should have almost 30,000 professionals in the field of forensic science. And it is only you who can take this forward, and the colleges like this who will be generating more and more students in the field of forensic science and allied sciences. Now, 5 timeless values for your journey. As you step into this new phase, I want to share 5 timeless values, each drawn from real life, that will guide you in both your career and your life. Shraddha is not a name. Shraddha is a faith. Have faith in yourself and your purpose. No more example like MS Dhoni. He started as a ticket examiner and in Kharagpur for elite cricket academies, but the belief in his own ability took him to the highest stage in the world cricket. There are so many in this lesson. Even when resources are limited, faith in yourself can turn an extraordinary path into an extraordinary journey. Second one is tap, that is tapas, discipline. Discipline means showing up every day, no matter how you feel. Neeraj Chopra, gold medalist at Tokyo 2020, was a result of years of daily training, early mornings, strict diets, and relentless practice. The lesson we learned is that consistency is more powerful than intensity. Progress, however small, adds up. Third is Vivek, discernment. Your ability to choose what is right over what is easy will define your integrity. The Infosys whistleblowers in 2019 risked careers to expose unethical practices. Their moral courage preserved companies' global reputation. In forensics, cybersecurity or finance, ethics are your greatest defense. Fourth is seva, service. Service is about using your skills to help others. During the COVID-19 pandemic, young volunteers built apps to track oxygen, beds, and medicines, saving countless lives. Now the lesson we learn is your degree is valuable, but your willingness to serve makes you truly respected. Fifth is sankalp, determination. Determination turns obstacles into stepping stones. Dr. APJ Abdul Kalam, despite many failures, rose to become India's missile man. And you can also see him in Salakar, which I already watched yesterday night. So you will also see the role of APJ Abdul Kalam while he is talking to Ajit Dovalji. Lesson: a strong resolve can carry you beyond any challenge. Now, student life beyond a classroom. Your success here will depend on how you balance academics, health, and personal growth. Academics, master the theory, but also seek practical applications, volunteer for projects, take part in competition like the wonderful dance we saw here, something phenomenal, and explore research opportunities. Physical health, join sports, practice yoga, keep your body active, energy is your fuel. Mental well-being, very important in this century. If you face stress or anxiety, speak up. Don't keep it to yourself. You will be having a session of Ritu Sharma also. Always share your problems and always try to resolve them. Don't keep it to yourself. Cultural and social life. Participate in events. They build confidence, teamwork, and leadership skills. Building your career from day one. Do not wait until the final year to think about your career. Begins now. Network with faculty, seniors, alumni, and industry experts. Apply for internships early. Keep a portfolio of your work, case studies, project achievements. Stay updated with global trends, forensic science and cyber, fraud investigation, rapidly evolving fields. Remember, employers don't hire degrees. They hire capabilities, attitude, and ethics. And in today's interconnected world, especially in cyber and digital forensics, you may have access to sensitive data
evidence and systems. With such access comes immense responsibility. Skills can be taught, but integrity must be lived every day. A single lapse in ethics can undo years of hard work. The next decade will bring AI-driven investigation. AI has changed everything. You must have seen Kishore Kumar's song, which is, I have never heard, was a phenomenal song which is there in AI generated, isn't it? Where? Sayyara. Even AI has changed the ending of Ranjana, isn't it? So now you have to use the technology for a good use. So AI-driven investigation, quantum encryption, global cyber crimes, networks, and increasingly complex legal challenges. You will be a part of generation that adapts to these realities. Your role is not just to get a job, but to lead in truth, seeking, protect the vulnerable, and uphold justice. Success is not one-time achievement. It is a habit built day by day. Now, I just remember an anecdote which was there in Reader Digest when I was in the school. One beggar, भिखारी, एक वो ज्योतिष के पास जाता है. He was 30 years old. And उसने सोचा कि यार ये 30 साल तो मैं कटोरा लेके घूम रहा हूँ, मैं मांग मांग के थक गया, अब शायद देखें ज्योतिष को दिखाएं क्या है, कोई परिवर्तन आता है कि नहीं. तो he goes to ज्योतिष and he shows his hands. ज्योतिष बोलता है you will remain unhappy and poor till you are 30. क्या? You will remain unhappy and poor till you are 30. उसने सोचा भिखारी ने कि मे बी नाउ दिस विल बी अ लाइफ चेंजिंग गेम, मेरा भाग्योदय हो रहा है, मे बी समथिंग न्यू इज़ कमिंग. देन ही आस्क देन व्हाट. तो ज्योतिष बोलता है देन यू विल गेट यूज्ड टू इट. ओके, सो you have to carve out your career, make the most of it while you are here. And there is a कबीर का दोहा भी है, जब आया तू जगत में जग हंसे तुम रोए. When you enter this world you are crying, but others are happy because a child is born. पर ऐसी करनी कर चलो तुम हंसे जग रोए. Thank you. Thank you so much, sir. As a token of gratitude, may we invite our Vice President, sir, to present a memento to our chief guest, Shri C.D. Jadeja, sir. We request Shri C.D. Jadeja, sir, to kindly come forward to receive it. Thank you, sir. To conclude this session with Jadeja, sir, we request our campus director, Mr. Sanjay Sharma, sir, to present a vote of thanks on this inspiring address. Good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today's event chief guest, Honorable C.D. Jadeja, sir. Honorable Vice President Dharmesh Vandra, sir. Our colleague Ravi, sir. Our principal Shailesh, sir. All my staff members and children. Welcome to all of you. Today's the day for you all. Diksharambh. Already you have passed one stage and you are in the second stage of your career where you are going to elaborate yourself, build your career. As Jadeja sir said, that come out of your weak points and find yourself in that. I heartily thanks to Jadeja sir. They have accepted our invitation, and though in NFSU they are having a lot of work, they have spared their valuable time to us. So a huge round of applause for the Jadeja sir for sparing their valuable time with us. I am thankful to Vice President sir. He is always a motive force to us and always guide us to run this institute. And I can say, sir, Jadeja sir is the
person who has sown the seed of this institute requested to Swamiji, and they both together went to NFSU and met our Honorable Vice Chancellor sir, and there they had a meeting, and thereafter the result is in front of you all. So huge round of applause for our Honorable Vice Chancellor sir, that because of his firm determination we are having this institute here. So we are always thankful to them, and we are always blessed by their blessings. I am also thankful to Ravi sir, Shailesh sir, and my entire team who is sitting over here. All the volunteer teams continuously since last 4-5 days, they are continuously working, coming to my cabin, going to sir's cabin, sir, what to do, how to do. We are, and really this is when I was a student, I was also part of committee members. And I think we all have been the part of committee members in our school days or college days. So even those who are sitting here, I think you also will be, in coming years, you also will be a part of this team. Always take the responsibilities, always come up with whatever you have. Mistakes happens, that's a secondary thing. But try to elaborate yourself, try to come out with your strength which you are having. They are doing their excellence job. Even all those team members, my admin staff who is not here, but somehow they are looking after their responsibilities at their respective tasks given to them. My heartiest thanks to them also. And heartiest thanks to all the students and the parents that you are here. Normally what happens, આજે તો કે દીક્ષા આરંભ છે, શરૂઆત જ છે કે પછી જઈશું, આજે જવાની જરૂર નથી. That comes. But thanks to you all that you are here at the right day, at the right time. I wish you all the best for your future ahead, and pray to God that you build a bright career from here under the NFSU, who is an INI institute. Thank you. Jai Swaminarayan to all of you. Big round of applause for the conference. आपका जैसा हमको भी बोलना नहीं है. Master of ceremony. Let us unite in the spirit of pride and patriotism. May I request everyone to please rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की Jai वंदे Mataram. Thank you, sir, for your precious time. Thank you so much. You are all welcome to NFSU. आते रहिए, मिलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. Come for internships, come to visit the laboratory. You are most welcome. लेके आना. Sure. Guys. मतलब समझे आवाज उनको बात
Can I rest?
Guys, please maintain silence. Hello, everyone. Hi. Give me a wave. Are you feeling the event? Are you excited? Say yes, please. All of you fresh faces, we were waiting for so long. The day one we were here as freshers, we were waiting for our juniors. And we are really happy here to see you. कुछ बोल दो. तो बोल guys, this is an interactive session. मैं बोलूँगी this is an ice breaking session, like something like that. Movement हो रहेगा दोनों. Guys, this is an ice breaking session. किसी को कोई question हो, anything regarding this university life here, anything you can ask. कुछ भी कोई भी doubt या फिर normal question, something that's silly, that can make us laugh. Ask us anything. कुछ observations जो आप लोगों ने देखे about this college. Any second thoughts, doubts? I'm sure a lot of you are extroverts. Your smiles tell me that. So please ask us questions, ask us anything. Tell us something that you have observed in this college. Q&A. NGL, not gonna lie. We found this. Okay, can we ask some of you why you chose forensic science? Would that be okay? Can we just simply point out the smiling ones? Yeah, that checks, was. These two people are very in light. Can you please stand up and tell us why you chose forensics? Hello, my name is Jatnavasti and I am from Rajasthan, Alwar. I have choose forensic science because I have I have to know about deep knowledge about the forensics, and I have given NEET exam also and I have passed it, and I was getting the lower fields in that area. That's why I choose forensics over NEET exam. Thank you. Thank you for speaking up. Let's give him a huge round of applause. Anyone else who got interesting story except then CID? Yeah. Let's not all name Dr. Salke. So we'll begin with the event. Behind every successful event stands a dedicated team working tirelessly to make it happen. Today's celebration wouldn't have been possible without the passion, creativity and hard work of our student committee, Udbhav. Udbhav, meaning origin or emergence, embodies the spirit of fresh ideas, dynamic leadership, and a united student voice. As the official student council forum of NSIT, our vision is to create a platform where every student's talent and aspirations find representation. With this new journey, we step forward together to lead, inspire, connect, and create a lasting impact. I would like to take a moment to introduce the members of our committee. Presenting to you the Student Committee, Udbhav 2025.
वीडियो है वही तो as you can see we are not afraid of judgment and neither do we judge, so let's move forward with more questions or introductions. किसी को कोई टैलेंट दिखाना हो, किसी को लग रहा हो मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, हम Too कैरियोके early लगा for देंगे. talents. Dancing and anything, guys. Let's make this a little more interactive. You can see we are very extroverts. We don't mind anybody speaking up. कितना ही गंदा गा लोगे, मुझसे खराब नहीं ही गा पाओगे. आ जाओ. हाँ, कंपनी ढूंढ लो आजू बाजू. फेवरेट सॉन्ग्स अगर तुम साथ हो, कुछ भी रैंडम मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग. Please come forward. Yeah, we saw that. Don't shy away. Yes. Give her the mic. What karaoke do you want? No. Hello everyone. Am I audible? Keep it close. Hello. My name is Drishti Sharma and I am from BSc MSc Integrated. So I'll sing like बड़े अच्छे लगते हैं शॉर्ट थोड़ा सा. बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदियाँ ये रहना और तुम हम तुम कितने पास है कितनी दूर है चांद सितारे. सच पूछो तो मन को छोटे लगते हैं सारे. बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदियाँ ये रहना और तुम. Thank you. Give her a big round of applause, guys. You sung really well. और किसी को इसके बाद तो आना मुश्किल है. इसके बाद तो आना मुश्किल है. नहीं कोई नहीं, थोड़ा कॉमेडी हो जाएगा. Yeah. डांस कर लो यार. Please. कॉम्प्लेक्स मत दो हमें. कोई खराब भी गाओ प्लीज. हम ही अकेले खराब नहीं होने चाहिए. Yes. इतने भी कूल जूनियर्स नहीं बनना है. नहीं. No questions, nothing. कुछ नहीं, कुछ इंटरैक्ट ही नहीं करना. We're not that scary, are we? Hey, don't stay silent. Say no. Anybody else? Stand-up comedy also works, but this is an institute. Let's remember that. Anybody? From the back? Ashni? Sapanoza sir is here. गाइस किसी को इंट्रो देना है? किसी को देना है? हमें इंट्रो लेना है तो ओके. रैगिंग साइन किया था. अच्छा ओके. गाइस हम माइक पास कर रहे हैं, सब लोग अपना नाम बता सकते हैं इफ़ दे वांट टू टेल अस देयर 12th की स्ट्रीम एंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट देम. सबके पास आई एम श्योर कुछ तो यूनिक होगा ही. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. Hello everyone, my name is Kanchan Nawani and I'm from Vadodara, and I never thought I would be in forensic science. I just took the decisions like
going with the flow thing. Like 10th ke Most end- of us here. Same bestie, same. I didn't even give NEET. I was like, no, medical तो नहीं करना है. Forensics was like मेरा 12th में introduction हुआ कि forensics and वो DNA fingerprinting का थोड़ा सा NCERT में था. लाइक दैट्स इंटरेस्टिंग. और फिर ऐसा एकदम एंड वाला डिसीजन था. एंड आई थिंक इट वुड बी गुड ओनली. Thank you for being here. I'm sure you'll love it. Yeah, sure. Thank you. बीच में एक नाम स्किप हो गया, 2 नाम स्किप हो गए. नाम ही तो बोलना है. नाम तो बता सकते हो. Hello everyone, my name is Siddhi Chauhan. I am from Surendranagar. Hi Siddhi. वो तो Hello everybody, my name is Makwada Mahi. I am from Commerce stream. हेलो एवरीवन. अभी मेरा नाम सुन के लाइक कंफ्यूज मत हो जाना. मेरा नाम इंद्राक्षी है एंड अभी प्लीज़ मेरे को मारना मत. ओके, आई एम फ्रॉम JNK. तो ओके, मैं पत्थर नहीं मारूंगी. ओके एवरीवन, डोंट वरी. सो आई एम कश्मीरी ब्राह्मण एंड लाइक बचपन से मेरा ऐसा ड्रीम है कि मैं देश के लिए कुछ काम करूं. ऑब्वियसली NDA मुझसे होगा नहीं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती ना. फिज़िकल में तो देख ही रहे हो कैसी हूँ मैं. तो फॉरेंसिक इज़ लाइक माई ड्रीम कि मैं लाइक कंट्री को सर्व कर सकूँ. थैंक यू. that requires an applaud, a huge one. Hello everyone, my name is Jadav Riya from Ahmedabad. Keep the mic closer to your face. Mouth. Hey everyone, my name is Nayak Bhavya. I'm from Ahmedabad only. Hi, my name is Anjali Mane. I'm from Pune, Maharashtra. Guys, speak louder. A little louder. इतना Yeah. softly नहीं बोलना. Hello everyone, myself Nandana Nandakumar from Mumbai. इसके बाद हमने कैंटीन में किसी को चिल्लाते हुए सुना. Then we'll come personally to ask more introduction. Hello everyone, I am Nijal Taylor and I am from Surat. Hi everyone, myself Mrinal Budi Telwar. I'm from Raipur, Chhattisgarh. Cultural diversity बढ़ रही है NSIT की. Yes. Hello everyone, myself Janvi Patel. I am Maharashtrian but born in Gujarat. एंड मैंने फॉरेंसिक साइंस एक्चुअली मज़े मज़े में लिया है. Relatable. बिकॉज कुछ करना ही था, अब साइंस ले लिया है तो पीछे जाने का ऑप्शन नहीं है, आगे कुछ करना ही है. सो आई टुक फॉरेंसिक साइंस. मैं इंट्रोड्यूस्ड फॉरेंसिक साइंस वॉज फ्रॉम टीचर्स इन स्कूल 11th स्टैंडर्ड में. एंड आई थॉट कि डॉक्टर बन के 9 to 5 जॉब करना, इमरजेंसीज में भागना, ये सब मुझसे नहीं होगा. I could handle Yeah, before this. NEET हमें Yeah. रिजेक्ट करें, हम ही उसे कर देते हैं. Yes. Yeah, good तो idea. नीट वीट का कुछ टेंशन ही नहीं. मुझे अगर करना ही है तो फॉरेंसिक साइंस फन के लिए करेंगे ताकि लाइफ में कुछ थ्रिल हो. दैट्स व्हाई आई चोज फॉरेंसिक साइंस. थैंक यू. You will be met with the reality very soon. Hopefully not shocking. Yeah. Hi everyone, my name is Sakshi Patel and I am from Bharuch. Hi Sakshi. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वरुण पटेल एंड आई एम फ्रॉम अहमदाबाद. मैंने BCA करा है अभी, बैचलर्स ऑफ डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में. और पहले से मुझे साइबर सिक्योरिटी में मास्टर्स करने का बहुत इच्छा थी पहले से, इसलिए मैंने साइबर सिक्योरिटी लिया. Good idea. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवांशु टाटू एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान. एंड मैंने ये कोर्स इसलिए चूज किया क्योंकि मेरे को थोड़ा बचपन से ही खून खराबा में इंटरेस्ट है. तो क्रिमिनल नहीं बनना है, बस करने को नहीं मिलता है, पोंछने को मिलता है. वो तो आगे देखेंगे जब मिलेगा. गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ शिवशंकर गिरी. मैं जामनगर से हूँ और मैंने BCA किया हुआ है फ्रॉम सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी. ओके. Hello everyone, my name is Darpan Rewani. I am from Ahmedabad. I am here to pursuing my MSc Cyber Security. Okay. साइड वालों को लग रहा हो बच जाएंगे, वापस माइक घूम के आएगा. चिल. Yes. हेलो एवरीवन, आई एम तनाव अष्टेकर फ्रॉम पुणे एंड फॉरेंसिक साइंस में 11th ग्रेड से इंटरेस्ट था, सो डिसाइडेड कि क्यों ना फॉरेंसिक साइंस ही कर लें. Guys, please be audible. You speak a little louder than you are doing right now. तुम्हारी फर्स्ट इंप्रेशन बन रही है सबके सामने अभी.
Hello, I am Radhesh and I'm from Delhi. Karmaditya C. Zarvaya from Bhavnagar. Hello, my name is Kushal Agarwal from Hyderabad. Hello, my name is Pratham Rawal from Jetarpur. Oh, Jetarpur. Locals. हेलो, आई एम प्रियांश यादव। मैं बांसवाड़ा राजस्थान से हूँ। मैंने साइंस ली थी और सोचा था कि डॉक्टर बनूंगा, नीट लूँगा, लेकिन एज शी सेड नीट रिजेक्टेड मी। सो मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट तब आया जब मेरा एक दोस्त इधर आया था, आपका ही कॉलेज है, लय द्विवेदी। सो इसमें बहुत डिफरेंट कोर्सेज और सब है, तो लाइक आई गॉट इंटरेस्टेड इन इट एंड गॉट एडमिशन। थैंक आई एम कुशल शर्मा, आई एम फ्रॉम नवसारी एंड 11 से ही मुझे इंटरेस्ट था फॉरेंसिक साइंस में। अपियर किया था नीट के लिए बट नहीं हो पाया, तो आई अपियर फॉर एनफेट और मुझे यहाँ एडमिशन मिल गया। सो ऑलवेज फैसिनेटेड था, लाइक स्कूल से टीचर्स फेवरेट रहा हूँ, तो आई लाइक बीइंग फर्स्ट इन एवरीथिंग दैट आई पार्टिसिपेट एंड आई ऑल्सो राइट पोम्स एंड नाइस। कोई याद है तो सुना दो। कोई याद होगी अभी? होगी एक आध। फोन में लिखते हैं अब तो सब। गाइस किसी को और भी टैलेंट हो तो प्लीज जब माइक आए। वही तो, ये तो चीटिंग है, जब माइक आया तब बताया। उससे पहले नहीं बताया। देर आए दुरुस्त है भाई। स्टार्ट आई थिंक। So this one is my favorite poem. Faces come and go, each one a story. I meet and part with many. People's path intersect, then diverge. In this flow, I find my place. Some become dear, others just. Each interaction leaves a mark, shapes my view. I am woven into the fabric of their lives, and they into mine. Threads of connection and memory. And through it all, I stay true to myself. Beautiful. Please give them a big round of applause, guys. Hi guys, my name is Tanish Singh Tomar. I am from Ahmedabad. So my story is basically like Jai Hilani, IIT Milani. so basically then I thought rather than doing some simple engineering, I opted for BTech MTech course in specialization for cyber security. Now I have a keen interest in cybers and the whole world of computers, and I play guitar. Wow. Ooh. Now we want more participation from this batch. Hello everyone, my name is Akshat Kumar Singh and I am from Gwalior. Yes. My name is Akshat Kumar Singh and I am from Gwalior, Madhya Pradesh, and I have completed BSc Forensic Science from my College of Life Science in Gwalior. Hello everyone, my name is Zian Lakhani. I have done Bachelor's in Computer Applications from GLS University. I am local from Ahmedabad. I went nationals in कबड्डी। हाइट बॉडी देख के भी लग ही रहा होगा। राइट। मेरे को साइबर सिक्योरिटी में थोड़ा इंटरेस्ट आया जब मेरे दोस्त का फ़ोन हैक हुआ था टेलीग्राम पे और वियर्ड मैसेजेस आ रहे थे। उसके बाद मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आया और हियर आई एम नाउ। Hello everyone, my name is Drumil Nandanwar and I am from Ahmedabad. Hello everyone, my name is Drumil and I am from Ahmedabad. Hello everyone, my name is Gaurav Age. I hail from Parbhani, Maharashtra and I have completed my 12th from Mahatma Phule Junior College. एंड मैं यहाँ कैसे आया मुझे पता नहीं। करियर स्विच करते करते लाइक बचपन से एनडीए का शौक़ था और मेरे फैमिली की 2 जनरेशन आर्मी में रही है, तो मुझे अभी आर्मी में ही जाना था बट एनडीए मुझसे हुआ नहीं। फिर बाद में सोचा कि पापा बोल रहे थे कि एएफएमसी चले जा, एएफएमसी अच्छा है, बट एएफएमसी का क्राइटेरिया है कि बोर्ड्स में 50% से मतलब हर एक सब्जेक्ट में 50% से ऊपर चाहिए। केमिस्ट्री मेरी पहले से ही वीक है, ऐसी भी और वैसी भी, तो वो तो वहाँ पे हुआ नहीं। ठीक है, फिर बाद में मेरा एक भाई है TISS मुंबई से ग्रेजुएट है वो भी, तो उसने सजेस्ट किया कि तुम आइज़र चले जाओ। आइज़र हुआ नहीं तो मैंने ड्रॉप लिया था आफ्टर 2024 मैंने अपना 12th कंप्लीट करने के बाद में। तो वहाँ पे लाइब्रेरी में मैं अपनी शॉर्ट्स चला रहा था यूट्यूब के, तो वहाँ पे वेरोनिका मदन करके एक कंटेंट क्रिएटर है ना NFSU गांधीनगर से, उसकी शॉर्ट आया। मैं सोचा कि यार ये भी अच्छा है, तो यहाँ पे आ गया मैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं
एक रील जिम कर लेता हूँ, रनिंग मेरी फेवरेट है और मेरी हॉबी सिंगिंग है। चलो रील्स किसी के तो काम आए। हाँ। Hello everyone, my name is Satish Kumar Dimar from Chhattisgarh and I am practicing flute from 3 years, Indian classical music, and that's it. Hi everyone, I am Kavya Parekh and I am from Jaipur. Louder. Hi everyone, I am Kavya and I am from Jaipur. I was very intrigued by forensic science, murder, investigative researches Forensic and all. science murder. Yeah, we do it here. Actually, I was trying to say forensic sciences, murder mysteries and investigative researches and all. Thank you. चलो नेक्स्ट बैच से बच्चे बच गए कभी। Hello everyone, myself Kanak from Rajasthan, Abu Road, and I have completed my graduation from Parul University, Vadodara. तो अब यहाँ आ ही गए हैं तो वहाँ तो सब फैंसी हाई फाई चीज़ें, कॉन्सर्ट्स एंड ऑल। हाँ एग्जैक्टली। और फिर हम यहाँ आए हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं और फॉरेंसिक्स इज़ लाइक कि मिस्ट्रीज, मर्डर्स, फन, थ्रिलिंग सब एंजॉय करते हैं। एंड लेट्स गो हाउ इट्स गोज। थैंक यू। चलो लेट्स एंड दिस इंट्रोडक्शन सेशन, बाकी का नेक्स्ट ब्रेक में। Yes, we'll have another ice breaking session and hear about all the others that are left. यहीं बैठना वरना फिर से आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। हाँ। मैं पढ़ूँगी। Behind every successful event stands a dedicated team working tirelessly to make it happen. Today's celebration wouldn't have been possible without our student committee, which works with passion, creativity and hard work of our student committee. Udbhav. Udbhav, meaning origin or emergence, embodies the spirit of fresh ideas, dynamic leadership, and a united student voice. As the official student council forum of NSIT, our vision is to create a platform where every student's talent and aspirations find representation. With this new journey, we step forward together to lead, inspire, connect, and create a lasting impact. Presenting to you NSIT Student Committee, Udbhav 2025. I would like to take a moment to introduce the members of our committee. Our General Secretary is P. Ayush, followed by our Treasurer, Mr. Sujal Sihani. Presenting to you our General Secretary P. Ayush Kumar. Followed by our treasurer, Mr. Sujal Sihani. Our hospitality and logistics team, headed by Ritu and ਮਿੱਠਾ Shubh. ਬੋਲਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜੱਟ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੋਰੀਏ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਵੱਡਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗੋਰੀਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜੱਟ ਅੱਡੀ 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 The photography club, Lumora, is led by Swagat and Bhatt.
प्रेशर कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीटी तब तक मार रट्टा मार। ओ पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार रट्टा मार रट्टा मार। Our cultural committee, Music Club, led by Adarshini, Viola, classical dance, Lasya, Miss Niharika Nair. Western infusion dance, Euphoria, Afshin Qureshi and Diptanshu Das. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. Social media, the social hub, Miss Priyanshi Gogari. Oh, गुजरिया, oh, गुजरिया, oh, गुजरिया है क्या है क्या इरादा तेरा, oh, गुजरिया, oh, गुजरिया, show me how to party. Sports Athlon, Mr. Adresh Mahapatra and Mr. Nathan Matejia. Decor, Elanza, Miss Vaishnavi Shah. चम 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 के सितारे बरसी body body pushing on me. Don't you in the party, I can do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Chum chum ke sitare barsi. Our core support team, Sabhet, देखो देखो Yash Dubey, Meet Shah, बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी. Haley Shah, Hetwi Dave, है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी. दिल पर Anjali Khatri, Ashi Rawat, दिलदार नजारे हैं आज ज़मीं पर उतरे कितने सितारे हैं. अगलो Heer Parikh, Palak Soni, दिल है और जानम बस दीवानगी 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 है ना कोई रह सकता. Drishti Jain, Siri Bharadwaj, Khushi Sharma. बस दीवानगी 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 है. All the hot girls put your hands up and say Om Shanti Om. All the cool boys come on make some noise and say Om Shanti Om. Oh, mast hai. A round of applause for my team, please. Guys, आज जो आप लोगों ने देखा, आई बिलीव आप लोग भी इसके पार्ट बनना चाहोगे. वी आर एक्सपैंडिंग. दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम. दिस इज़ आवर फर्स्ट कमेटी. इससे पहले भी थी, बट दिस इज़ द फर्स्ट ऑफिशियल कमेटी दिस कॉलेज हैज़. एंड वी आर एक्सपैंडिंग. वी आर ओपन. विल बी हैविंग ऑडिशंस फॉर एवरी क्लब एंड वी वेलकम यू ऑल ओपन हार्टेडली. एंड आई बिलीव आप सब आएंगे. राइट? राइट? नहीं आया? नहीं आया? Done. Thank you. Now we will be welcoming our second guest. Please be seated. Everyone please settle down.
कहाँ से पढ़ना?